So we will start again with the non-est inventors. So he is not found. This is the legal maxim class. अगर जो लोग अभी join कर रहे हैं, non-est inventors, he is not found. Reported by a sheriff on a writ where the defendant cannot be found in his country or jurisdiction. So this is one. Non faciet melum ut inde veniat bonum. Not to do evil that good may come. Performing some illegal action is not excused by the fact that positive results come therefrom. Often used to argue some form of expression such as graffiti or pornographic films cannot be given the protection of law as they are may be considered illegal or morally reprehensible. So, if you are doing an illegal act and you are giving the justification that some good is coming out of it, it is not valid. So most of the time, people in Himachal Pradesh give this argument that hash, if it is grown in Kasol, it is good for the economy of Himachal Pradesh. But overall, it will produce druggists, people who disrupt the state, criminals, or even if they are not producing any criminals, they are producing people who are just absolved, totally dissolved in the drug abuse. Or either they are doing it or either they are the victims of it. So in both cases, it's a bad thing for the society. So that's one live example of it. Non-liquid, it is not clear. A type of verdict where positive guilt or innocence cannot be determined, also called not proven in legal systems with such verdicts. अब ये है जैसे सलमान खान का हिट एंड रन केस था, उसमें बोला नॉट सफिशिएंट एविडेंस और सॉन्ग, ना इसमें लीगल वो हुआ प्रूव आपका, ना कोई आप इनोसेंट हुए, ये अलग ही तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, बट हाँ बाहर निकल जाता है वो बंदा, बिकॉज इनोसेंट अंटिल प्रूवन guilty. That's the case. So you are not proven guilty, so you are innocent. But the judgment itself is very confusing. It is neither positive guilt nor innocence, because the true evidence could not be found. Crime तो हुआ था जी, but पता नहीं किसने किया था. Like that. जैसे भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, जहाँ भीड़ तो बस भीड़ होती है, तो वो शायराना अंदाज में आप अपनी कमियों को कवर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि उस भीड़ की कोई ना कोई जाति होती है या कोई ना कोई धर्म होता है, संप्रदाय विशेष होता है, जिसको आपको अपने पॉलिटिकल हितों के लिए रखना पड़ता है. Non-obstantive verdict, notwithstanding the verdict, a circumstance where the judge may override the jury verdict and reverse or modify the decision. So it is very easy. Novus actus intervenius, a new action coming between a break in causation and because something else has happened to remove the causal link. So आप आए, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में हॉर्न बहुत तेज, सामने से कोई आया बहुत अलग तरीके से आ रहा है, आपने बहुत तेज से हॉर्न बजा दिया, ठीक है, वो हॉर्न बजता रहा, उसके बाद वो बंद नहीं हुआ, सामने से पीछे से कोई आया, उसने वो हॉर्न सुना, उसका ध्यान भटक गया, वो आगे चलता गया, उसकी आंखें ब्लिंक कर गई, या उसके वो कान मतलब सुनना हो गया उस वजह से, और उसके बाद उसकी गाड़ी कहीं पे निकल गई. तो यहाँ पे जो है कॉजेशन एकदम जिसे कह सकते हैं आप सीधा क्लियर है, ठीक है ना. लेकिन अब जैसे मान लेते हैं उस गाड़ी में जो पीछे से कोई गाड़ी आई, साइकिल पे आया, उसके साथ एक लेडी थी, लेडी घर पे गई, घर पे जाने के बाद उसको अगले दिन पता चला कि उसका अबॉर्शन हो गया है ड्यू टू मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया है ड्यू टू दैट साउंड और ड्यू टू दैट शॉक. तो यहाँ पे कॉजेशन पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि उसकी साउंड, क्योंकि साउंड की वजह से कॉजेशन होना, वो क्लेम कर सकती है कि हाँ जी मेरे को शॉक से हुआ, बट देन दैट्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कॉजेशन ब्रेक हो गया ना बीच में. Nosicator res sociis, it is known by friends, an ambiguous word or term that can be clarified by considering the whole context in which it is used without having to define the term itself. So, let us say that 3 men are poultry farmers. Okay. Suddenly, there is a case for a sexual harassment by a girl passing by. So, now they are talking and they say, what a great chick, what a hot chick. ठीक है. So what a great chick can be interpreted as, अगर पास में poultry farm है, तो what a great chick can be something that can be interpreted in, like if some chicks are moving around them, then it can be interpreted for them, or it can be interpreted for the passerby woman which was going away. So that has to be taken कि friends के बीच में उसका मतलब क्या है. Do they use it for chicks? Have they used it for the women? Have they used it for the original chicken chicks? So that has to be used, right? So it is known by friends only कि वो कोड वर्ड उस टाइम पे यूज किसके लिए किया गया. वैसे तो दोनों तरीके से यूज होता है, उस स्लैंग में उसको बोलते हैं, बट फॉर व्हाट इट वाज यूज्ड.
Nota bene, note well, a term used to direct the render to cautionary or qualifying statements for the main text. So note well देखिए बहुत टाइम आता है, आपका बहुत यूज होता है, जो अच्छे इंटर्न्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर्स की बात हो या जजेस की बात हो, बहुत सही से वहाँ पे यूज करते हैं. Justice Amy Coney Barrett, which is now the new Supreme Court Justice of the Supreme Court of the United States, Associated Justice of the Supreme Court of the United States of America, was an intern with Justice Antonio Scalia. Antonio Scalia was one of the most conservative judges that has adorned the Supreme Court of the United States. So it is known from her time only that he referred to her abilities as something extraordinary. That woman is extraordinary. That girl, when she was a girl and she was interning with him. So that's how it is. And getting an internship with a judge in the Supreme Court in the United States is considered a very big honor. उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, पेपॉल का फाउंडर है, 0 to 1 के बुक का नाम किसने लिखी है? 0 to 1. Who wrote it? Shreya, if you remember it, can you please speak? Who wrote 0 to 1? If you remember it, you can speak, Shreya. 0 to 1 written by? Peter Thiel. So Peter Thiel wrote the book, and Peter Thiel wanted to apply for a Supreme Court justice. He was a passer from Harvard or Yale, and he couldn't get through. So he said, in the Hindu side, it was important कि मैं नहीं गया, मैंने PayPal found कर दिया. But the thing is that it is so, जिसे कह सकते हैं कि very sought after, because then it directly opens up your position to the justices and the court justice. Because even you are an appeal court justice or a US circuit court justice, that means also a great thing. Nudum pactum, naked promise, an unenforceable promise due to the absence of a consideration or value exchange for the promise. There is no consideration. मैं आपके नाम पर पूरी स्मार्टकीडा साइट कर दूंगा. ओके, बट क्यों, कैसे? बस नहीं, मुझे आप अच्छे लगे. दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छे लगे तो क्या रीजन था? मैं आपका पोता था, दादा था, नाती था, कुछ तो था, वो कारण पे तुम वहां पे मिलेगा. न्यूला बोना, नो गुड्स, नोटेशन मेड व्हेन अ डिपेंडेंट मेड नो टेंजिबल प्रॉपर्टी अवेलेबल टू बी सीज्ड इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द जजमेंट. ठीक है. नो गुड्स, आपसे कहा जाता है कि आपने कोई क्राइम किया, तो जज बोलता है कि सारी संपत्ति जब्त कर लो फॉर गिविंग टू द प्लेंटिफ, लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वहां पे नो गुड्स लगे. नो ला बोना, ही हैज नथिंग टू गिव टू सेटिस्फाई द जजमेंट, टू सेटिस्फाई द डिक्री, ही हैज नथिंग. Nulla poena sine lege, no penalty without a law. One cannot be prosecuted for doing something that is not prohibited by law. So आपने किसी को कुछ कर दिया जो आज क्राइम नहीं है, तो कल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक लॉ नहीं बना सकता कि जो कल इसने किया है पिछले वाले दिन में, वो आज क्राइम हो जाएगा ना. No penalty without a law. It has to be a penalty or either it does not have to be. Nullum criminal, nulla poena sine private legi point. No crime, no punishment without a previous penal law. Same thing. Nung prong tung. Now for them, an action by a court to correct a previous procedural or clerical error. ये मैंने आपको कल बताया था कि कैसे क्लरिकल एरर जो है वो ठीक की जाती है कोर्ट द्वारा बाय यूजिंग. क्लरिकल एरर आपसे हो गई, लेटर से जजमेंट में आप 15 लाख रुपए कैश लिखा है, आपने कंपनसेशन है, नीचे जो आपने फाइनल ऑर्डर अमाउंट लिखा न्यूमेरिकल में, वो आपने 15,000 लिख दिया, तो वो करेक्ट हो जाती है. ठीक है ना. ऑबिटर डिक्टम, अ थिंग सेड इन पासिंग. तो जो ज्ञान फैलते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, इन टर्म्स ऑफ वेदास एंड इन टर्म्स ऑफ गीता, और जिसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता है लॉ के साथ, उसको ऑबिटर डिक्टम बोलते हैं. पासिंग मेड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजेस. ठीक है. Pacta sunt servanda, agreements must be kept. A fundamental principle of law. This is a fundamental principle of law in terms of international law. Agreements must be kept. Treaties must be followed. So whatever treaty you do, you are bound by it. That's why the Indus Water Treaty, which was sent by Jawaharlal Nehru and that time bureaucrats, कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है, उसके साथ एक अच्छी ट्रीटी करते हैं, कल उनका दिल सुधर जाएगा and they will form, India will be one again. 1965 तक ये illusion चल रहा था. अभी भी 1999 में भी चल पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कि नहीं हमारे भाई हैं. What happened with Kargil is that we lost 500 soldiers due to that foolish thinking. Even though Atal Bihari Vajpayee was great in many things, in terms of roads, Sarva Shiksha Abhiyan, but things have to be called. Shairi, Shero Shairi and that thing in Pakistan do not work at all, because that country is a live mind bomb. Okay, so
यहाँ पे जो था एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट, दैट थिंग्स आर कि आपको जब ट्रीटी एंटर करनी है, यू हैव टू थिंक अबाउट द नेशन इन टर्म्स ऑफ 100 years, 500 years. Okay, maybe we have to follow that treaty. And it was the Versailles Treaty which caused the World War II. अब जो राजस्थान और पंजाब में वॉर चली रहती है पानी को लेके, दिल्ली को लेके, क्यों चली रहती है? क्योंकि इंडस का सारा पानी तो आपने 80% पाकिस्तान को दे दिया, जो कि वो यूज ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप ट्रीटी वाइज आप उसको वो नहीं कर सकते, डिफंक नहीं कर सकते। तो ये बात है, हमारा कैचमेंट एरिया हमारा है, हमारी सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन है। The rishis have formed the civilization sitting on the banks of Sindhu, and they have meditated there. The Vedas were formed there. But unfortunately, not only the civilization, but due to the foolish mistakes of our four founding fathers of the nation, even the water is gone permanently till the time state India and Pakistan as it exists now in the present condition. Par delictum है equal fault used when both parties to a dispute are at fault with each other. So equal fault है आपका, आपने भी गलती की, उसने भी की। मैंने पहले जो एग्जांपल दिया उसमें याद आता है। Parents patria, parent of the nation, refers to the power of the state to act as a parent to a child where the legal parents are unable or unwilling. So that's how it is. जहाँ legal parents unable है, unwilling है, वहाँ पे power of the parent आ जाती है, power of parent nation के पास power आ जाती है कि वो child के benefit के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Pater familias, father of the family, head of the household. So that's how it is. Per capita, by head, I don't need to explain it. Per contra, by that against, legal shorthand for in contrast to, ठीक है, by against. Per curiam, through the court. It is a curiam decision जिसे आप कहते हैं कि a decision delivered by a multi-judge panel such as an appellate court in which the decision is said to be authored by the court itself. Instead of situation where those individual judges supporting the decision are named. So कोर्ट जैसे आपका आ जाता है कि पर क्यूरियम, कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया, कोर्ट के द्वारा ये संज्ञान लिया गया, कोर्ट के द्वारा, तो ये वहां पे आता है। अगर सिंगल जज हो तो नॉर्मली सिंगल जज में आ जाता है कि उन्होंने ये ऑथर किया जजमेंट या किया। बट नॉर्मली हमारे केस में मल्टी जज जहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होते हैं वहां कोर्ट ही आता है, नाम लिखा, सुप्रीम कोर्ट ऑथर दैट डिसीजन। पर इंक्यूरियम बाय द नेग्लेक्ट, द जजमेंट गिवन विदाउट रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। Per minas through threats used as a defense when illegal acts were performed under duress. So let us say that I एक ब्लैकस्मिथ है, श्रेया और पूर्वांश ठग्स हैं, वो रात को निकलते हैं और बोलते हैं कि रोहित जो है उसके घर पे बहुत कैश है, उन्होंने हमारी फीस बहुत ज्यादा ली है, तो उनका हमने पैसे लूटने हैं। तो वो ब्लैकस्मिथ को ले जाते हैं और ब्लैकस्मिथ को बोलते हैं ताला तोड़ इसका, नहीं तो तेरा भेजा तोड़ देंगे। तो वो तोड़ देता है। तो अब ये अंडर थ्रेट है, अंडर ड्यूरेस। तो ये केस में ब्लैकस्मिथ आउट हो जाएगा, सारा दिन पड़ जाएगा मेरे जो दो स्टूडेंट्स हैं उन पर मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि मैं सब पैसे स्पेंड कर चुका हूँ। प्योर पर क्योर्ड बाय विच यूज इन लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द सेम सेंस एज वेयर बाय as per cured statement is typically used to show that specifics and have consequences which form the basis of the legal action. Whereby, so whereby the plaintiff admits that he has killed the defendant in for an act of revenge due to an act of by an act of revenge for his act done 3 years back. So by which procured, whereby, whereas ये सब legal language में चलता है। Per se by itself, something that is as a matter of law. So hierarchy of the courts, the authority of the president as commander of the forces. President by itself is protected under the Indian Constitution from any civil action for 2 months. ठीक है, तो वैसे है उसमें क्रिमिनल एक्शन से कई चीजों में प्रोटेक्ट होते हैं because acts are in his name but they are done by the secretaries, not personally responsible. First types by branch ऐसे होता है, देखो ये है, मान लेते हैं ये एक, लेट अस से दिस इज वन पर्सन, तो उसकी फैमिली ब्रांच है, 3 सन्स, तो प्रॉपर्टी तीनों सन्स में बटेगी। अब अगर वाइफ है तो वाइफ चौथी होगी, डॉटर है तो 5वीं होगी, तो इट्स गोइंग, तो पर स्ट्राइप है, स्ट्राइप्स होता है ना, स्ट्राइप। अब दूसरा आता है स्ट्राइप्स, ये स्ट्राइप्स है, देखो अभी आर आई हो गया है, तो स्ट्राइप्स होते हैं, कई बार लड़कियां भी स्टाइल करती हैं, लड़के भी करते हैं, तो दैट स्ट्राइप्स, सिंगल स्ट्रैंड्स। Per equilibrium in mora, danger in delay,
condition given to support requests for urgent action such as protective order, restraining order. आपका घर तोड़ रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपके पास पूरे कागज हैं, ठीक है, तो आप कोर्ट से लेने चले जाते हो कि कल आ जाता है आपको नोटिस कि कल हम आ जाएंगे मशीन लेके, तो फिर आप एक दिन पहले चले जाओगे कोर्ट के पास कि डेंजर, आप इस पे स्टे ऑर्डर लगा दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस वहां पे फिर डेंजर इन डिले वाला पूरा आता है। Persona non grata, unwelcome person, a person who is unofficially considered unwelcome by a host country in which they are residing in diplomatic capacity. The person is typically expelled to their home country. सऊदी अरेबियन पर्सन स्टेबी दो, तो उन्होंने रेप किया था किसी डोमेस्टिक मेड का इन इंडिया, तो जब उन्होंने रेप कर दिया उसका, तो उसके बाद उन्हें उनकी डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपेल कर दिया गया दोबारा से, क्योंकि हम उन्हें हाथ तो लगा नहीं सकते अंडर एनीथिंग, बिकॉज देयर हैज टू बी सीन बाय द कंट्री इटसेल्फ कि हम कैसे पर्सन भेज रहे हैं। उन्होंने रेप किया उसका, तो वो रेप कंडीशंस में आ नहीं सकता है, तो उसको वापस भेजना पड़ेगा। Was the committee's power of the country? Body of armed citizens pressed into service by legal authority to keep the peace or pursue a fugitive. So this is comitatus. Power of the armed citizens. Pursue a fugitive, keep the peace. आर्मी को कह सकते हैं आप, इसके अंदर स्पेसिफिक बॉडी आपने बनाई है उसके लिए कह सकते हैं। पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ, ये तो काफी आपने सुना हुआ है। सो आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम आफ्टर इज आफ्टर द ऑथर्स डेथ, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, which are usually based around author's lifetime, but after author's lifetime I guess 60 more years होता है। तो चार्ल्स डिकेंस की कोई भी बुक ना आप पीडीएफ फॉर्मेट में उठा के आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 1857 में या 1819 में he died, must have died 1910-20, after that 60 years have passed, so his works are now for free for intellectual delight of the people. Magistrate of the foreigners, the Roman praetor responsible for matter involving non-Romans. Praetor Pregerinus. प्राइमा फेसाई एट द फर्स्ट फेज, प्राइमा फेसाई लग रहा है कि क्राइम मेरे एक स्टूडेंट ने किया है, तो वहां पे prior tempore potitior iure, earlier in a time stronger in law, a legal principle that older laws take precedent over newer ones. Another name for this principle is lex posterior. ठीक है, older laws take precedent over newer ones. Another name for this is lex posterior. Earlier in time stronger in law, लेकिन अभी के कंडीशन में ये सेम नहीं है, जो न्यू लॉ बनता है वो ओरिजिनली पुराने लॉ को ओवररूल कर देता है। सो लेट अस से अब नया लॉ बना है न्यू दिल्ली, ये जम्मू कश्मीर के लैंड लॉ से रिलेटेड, तो पुराने सारे लॉ इसमें ओवररूल करती है, वेयर बाय इट इज हेल्ड दैट ऑल लॉज अप्लाइड फ्रॉम 1953 to 2019 are hereby declared as null and void and in its place are hereby declared as ineffective, null and void नहीं करते use, ineffective, and now in its place land ordinance act या land laws Jammu and Kashmir 2020 will be used, ऐसे आता है, ठीक है। Prius quem exceedius indices, before you hear do not judge, very easy, you can use it in your personal relationships of any kind. Probatio vincit presumption, overcomes presumption, proof overcomes presumption. So I was presuming that the person is innocent, but then in the scene of the crime his hands were found on the object of crime, on the weapon of crime. So चाकू पे उसके हाथ आ गए तो proof हो गया। Probatio vincit present pro bono for good, pro bono work कर रहे हैं, pro bono publico for the public good, pro forma as a matter of form, things done as formalities. So फॉर्मेलिटी के लिए आप कई चीजें करते हैं, स्टेट के फंक्शंस में ये बहुत बार आता है कि मतलब उसको एक, चाहे वो किसी भी स्टेट से आया हो, उसको एक प्रॉपर तरीके से रुकाया जाता ही है, चाहे किसी भी कंट्री से हो, एक प्रॉपर उसको 3 स्टार 4 स्टार जगह पर रुकवाया जाएगा। मान लेते माली से आ जाता है, सोमालिया है, तो भी उसको एक प्रॉपर जगह दी जाएगी, ये नहीं कि उसको होटल चंद्र प्रकाश सम्राट में ठहरा दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही। प्रो हैक वाइज फॉर दिस टर्न refers to a lawyer who is allowed to participate in a specific case despite being in jurisdiction in which he has not been generally admitted. स्पेसिफिक केसेस होते हैं, कई केसेस में इंटरलोक्टर की तरीके से केस में जाते हैं, वो आपका इंटरप्रीटर होते हैं, उसी चीज के लिए उनको अलाउ किया जाता है। जनरली पार्टीज के बीच में जब केस चल रहा होता है तो किसी तीसरे लॉयर को नहीं बुलाया जाता, बट आप फिर प्लीड करते हो कोर्ट से कि हम भी इसमें राइट्स में
इन्वॉल्व है, तो इंटरप्रीटर सूट्स में ये मैक्सिम लग सकता है, ठीक है। प्रो पर एब्रिविएशन ऑफ प्रोपेरिया पर्सोना मीनिंग वंस ओन पर्सन, तो हमारा ही बंदा, हमारा ही लॉयर है। प्रो रेटा फ्रॉम द रेट, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है वो, इंटरेस्ट रेट कितना देना है, कितना हमने कमाया है, उस हिसाब से हमारा इलीगल पोजीशन था तो 10 साल इलीगल पोजीशन था तो 10 साल के पैसे हमने देने हैं। प्रो से फॉर हिमसेल्फ, प्रो टेंटो फॉर सो मच, प्रो टर्म फॉर द टाइमिंग, टाइमिंग के लिए आपको हम पोजीशन दे रहे हैं। प्रो टेम्पोरे अगेन फॉर द टाइम बीइंग, प्रोपेरिया पर्सोना प्रॉपर पर्सन refers to one representing themselves without the service of a lawyer, मेरे पास पैसे नहीं है लॉयर को देने के लिए तो मैं अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्राउड पेटेड per se as recordum as appears in the record. So that's it. Thank you very much for joining in the class. I hope you had a good time. Take care.